ये भारत में स्कॉटलैंड और रशिया की बनी प्रीमियम ब्रांड विस्की। ये ड्रीम वेल ब्लेंडर स्कॉच विस्की फ्रॉम स्कॉटलैंड और रशिया स्पिरिट्स hosted by Kelvin Peterson, former England cricketer, captain and investor in Eldon Alcodez, along with the co-founder. Distilled and bottled in original bio, the new spirit is capture authentic global craftsmanship while helping Indian consumers seek premium quality of several price points. Dream Bell bottle in Scotland. What I'm very aware of is collection where whiskey India is, bottle Scotland and where India will be in 5 years, 10 years, 15 कुलवंत years. कौर के साथ बंसीलाल You have a look at चैनल where I सब्सक्राइब live. कीजिए और शेयर कीजिए। There's थैंक downhill यू। slide. You have a look at India, and there's an incredible opportunity in India. I've been coming to India since 2003, and so I've seen India when you get the phone call to go to India, and it's okay, what to pack, what am I going to eat, how long are we going for? I now get the opportunity to bring my family here, my children here. We have the most amazing time here. It is just one of the most special places. And so when looking to invest and looking and seeing how much India has grown and the development, it was an easy answer in terms of looking at what the business was. So can I add value to a business is something else that I have to make sure that I can. Am I really that interested that will make me ask questions about the business? Or do I just forget about it and go, this is money and we'll see where it is in 5 years? I will only invest in something if I have that inquisitive nature to know that I'll keep coming back to it, wanting to know if I can add that value. The most important part are the partners, and we've got them on stage here now. I think what's really, really fundamental to the growth of a business, to understanding a business, is making sure that you have people in the business who have got tremendous experience. And the gentleman that we have fundamental to the growth of a business, to understanding a business, is making sure that you have people in the business who have got tremendous experience. And the gentlemen that we have on stage here have got unbelievable experience in growing brands for other people. My background in whisky blending, I've been coming out to India since 2015, not quite as long as Kevin. But I've done a lot of work out here within India, with the Indian whisky market. And I think when it came to the development stage of Dramdale, it was creating a profile that's going to be well enjoyed by the Indian consumer. The whole story of Dramdale is about bringing people together over whisky. And I think that the kind of the recipe or the makeup of both of these types of whiskies was to be approachable. So they're whiskies that are great tasting, really well balanced, complex, that will appeal to whiskey fans. But they're also approachable. They're the whiskies that if you're not a go-to whiskey drinker, this could be the dram that maybe gets you into whiskey. And I think with everyone, that's the whole concept of Dramdale, really. Basically, Dramdale, Blender's Pride, which is the biggest brand in that segment, it's priced at around $1,500, right? While the Dramdale 3-year-old is priced at 1,800 rupees. So, it's very easy for the consumer to kind of upscale and move up. So that's how we've positioned all our brands. It's very, very competitive in terms of our pricing. Even the 5-year-old, which is one of its kind in the country, there's no 5-year-old that you have, right? Today, a 5-year-old is actually cross-line in terms of pricing with a 3-year-old. And both these brands are bottled in origin, so they're not bottled in India at all. The complete bottle comes in from Scotland here. So that's the other USP that this brand has. I soak in craft. I soak in passion. I am Jin Soak. I am soaked in obsession. How's that? Why your camera was busy then, huh? It was much busier. Cool. Awesome. Kevin, first of all, that was a very romantic video there. It looked very nice, a good visit.
5-year-old, जैसे मैंने आपको बोला था, the 5-year-old is supposed to be premium because it's a 5-year-old age Scotch, which is the only in the country. और कोई 5-year-old नहीं. 5 years old barrel उसको होल्ड कर सकते हैं. So basically, it is aged. 5-year-old basically is trying to understand how is it 5-year-old because we age it for 5-year-old, 5 years. उसको cask में हम लोग रखते हैं. We keep it in the cask for 5 years. Only then after that it is bottled. Anything below 5 years you can't bottle it, and you can't even name it as a 5-year-old. Thank you so much. Thank you very much. जिस तरीके से आपने बताया कि इंडियन कोई भी ब्रांड है, ये जो ब्रांड है स्कॉच जो है मिनिमम 3 साल तक आपको स्टोर करना पड़ता है. उसके बाद जो भी है 5 साल होता है, 10 साल होता है, 12 साल होता है, 25 साल के भी स्कॉचेज होता है. तो ऑफकोर्स जितना आप उसको एज करोगे, स्टोर करोगे, उतना ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ेगा. और यहाँ पे हम लोग ने देखा कि मार्केट में 5-year-old का कोई ब्रांड ही नहीं. ये जितने भी आप ब्रांड्स देख रहे हो आज की तारीख में स्कॉच में, ये सब 3 साल के हैं. तो हम लोग ने बोला एक 5-year-old एक प्रीमियम थोड़ा सा स्कॉच होना ज़रूरी है एट वेरी वेरी सुपर प्राइस पॉइंट, एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट. ये जो प्राइस पॉइंट है ये क्रॉस लाइन है विद ऑल द अदर 3-year-olds. दैट इज व्हाट इट इज. सो दैट इज हाउ इट इज. वी आर गिविंग समथिंग मच मोर सुपीरियर टू द कंज्यूमर एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स दैट आर अवेलेबल. सर भारत में कहा जाता है दिखता है वो बिकता है. एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैकेजिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो क्या यहाँ पर इंडिया में क्या उसका अलग से पैकेजिंग की जाएगी, क्योंकि नॉर्म्स बहुत होते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो होते ये हैं. पूरे जितने भी ब्रांड्स हैं ये सब बॉटल्ड इन ओरिजिन है, तो वहीं पे बॉटल किया हुआ है. तो यहाँ पे हम लोग बॉटल करते ही नहीं है. क्योंकि यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे बॉटल करोगे तो फिर वो परसेप्शन जो है कंज्यूमर का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ का पानी अलग है, वहाँ का प्रोसेस अलग है, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट आउट. मैं कह रहा हूँ ऊपर की पैकेजिंग की बात कर रहा हूँ, जो आप यहाँ पे इंडिया के फोकस के हिसाब से तो यहाँ पे जैसे क्योंकि बहुत चीज़ें आती हैं, कोड बार कोड भी होता है, नो कंजप्शन, इसमें भी बार कोड है, इसमें भी अगर आप खोल के देखेंगे तो वहाँ पे भी एक सिपर है, तो सब कुछ है. वी हैव केप्ट एवरीथिंग परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. वी हैव नॉट कट कॉर्नर्स इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. गवर्नमेंट के नॉर्म से पूरे करें. तो जैसे मैंने आपको बोला था, अभी महाराष्ट्र का अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बेसिकली 3-year-old जो है रेड वाला जो है दैट इज एट 1800 आउट देयर इन महाराष्ट्र. 5-year-old इज एट 2500. ओके, द वोडका इज एट 1900 एंड द जिन इज एट 2300. यहाँ पे अगर आप देखेंगे हरियाणा या अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो यहाँ पे जो है द 3-year-old जो प्रीमियम है इज द लोएस्ट प्राइस पॉइंट है. आज जो बाकी जो हैं जो BIO ब्रांड्स हैं वो सब 1300 और 1400 का है, और हम लोग का भी 1400 और 1500 का ये जो 5-year-old है. ओके, वोडका का भी वही हाल है. वी आर एट दी बॉटम, वी आर रिटेल्ड एट नाउ अराउंड 1100 to 1200 रुपीज़ अ बॉटल. ठीक है, और जिन जो है वो 14 से 1500 के बीच. थैंक यू.